Hello everyone, welcome to the lecture 3 of percentage. Now first question is, if 16 is added to a number, then result becomes 116 combination 2 by 3% of itself. Find the number. So क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में 16 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 116 कॉम्बिनेशन 2 by 3% खुद का हो जाएगा। तो वो नंबर, वो संख्या ज्ञात कीजिए। सो सबसे पहले हमें 116 कॉम्बिनेशन 2 by 3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। सो 100% एंड 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3%, इन दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 और 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6। सो इसको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7/6। नाउ 7/6 हमें क्या शो कर रहा है? 7/6 हमें ये शो कर रहा है कि ओरिजिनल नंबर जो है वो 6 यूनिट है और जो न्यू नंबर है वो हमारा 7 यूनिट है। 7 यूनिट है, ये न्यू नंबर है, राइट। सो एज पर क्वेश्चन 16 जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 7 यूनिट मिल जा रहा है। 16 हम 6 में ऐड कर रहे हैं, सो द डिफरेंस इज 1 यूनिट। सो एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 16 है। तो फाइंड द नंबर। ओरिजिनल नंबर इज 6 यूनिट। सो 6 यूनिट की वैल्यू जो होगी 16 इंटू 6, 96 यूनिट। ये हमारा आंसर है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 21 इज एडेड टू अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 कॉम्बिनेशन 1/2% ऑफ नंबर। फाइंड द नंबर। अगर हम किसी संख्या में 21 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 137 कॉम्बिनेशन 1/2% हो जाएगा उस संख्या का। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। सो अगेन 137 कॉम्बिनेशन 1/2% को हम ब्रेक कर लेंगे टू पार्ट्स में, दैट इज 100% प्लस 37 कॉम्बिनेशन 1/2%। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1 और 37 कॉम्बिनेशन 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8। सो द वैल्यू विच वी विल गेट इज 11/8. Now the original is 8 unit and the new number is 11 unit. जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये ओरिजिनल होगा और ये न्यू होगा। सो ओरिजिनल में हमें 21 ऐड करने पर न्यू नंबर मिल जा रहा है। सो द डिफरेंस इज 3 यूनिट। सो 3 यूनिट की वैल्यू हमें 21 गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू है 8 यूनिट। सो 8 यूनिट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3। सो 56 इज द आंसर। नाउ ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 कॉम्बिनेशन 1/2% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। Let's break the 37 combination 1/2% into its fractional form. So 37 point combination 1/2, that is 37.5 को हम लिख सकते हैं 3/8 and 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, right? So if you find the area, so this will be 3/8 into 1/5, that is 3 upon, just a second. So this is the increment of 3 unit over 8 unit. So the length is, new length will be 11 and original length will be 8. Similarly here, new breadth is, since it is decreased by 1 unit, so new breadth will be 4 unit and original will be 5 unit. Now we have to multiply these two numbers to get the to find the percentage change in area. Sorry for this, I'll just cut it here. So 11 cross 4 is equals to 44 and 8 cross 5 is equals to 40. So percentage change in area. So there here we will see that there is a change of 4 over 40. So percentage change, I am writing here in this very small space. Percentage change is 4
upon 40 into 100. So that is 4 by 40 is 10 and 100 divided by 10 is 10%. So the answer will be 10%. Now coming to the next question, it is given that if the side of a square is increased by 40%, find the percentage change in area. So इस टाइप क्वेश्चन आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं. Just keep it in mind 40%. So I am not going into detail so much. So 40% is 2 by 5, right? So 2 by 5. So it is given there is an increment of 2 unit over 5 unit, right? So 7 upon 5. This is the increment of this is the original side, and this is the new side, and we know that area is square of side. So if we square this fraction, so we'll get 49 upon 25. So now coming to the question, percentage change in area. So what will be the change? So change is 49, difference between 49 and 25, that is 24. So the percentage change will be 24 divided by 25 into 100. So 25 4 ja 100 and 24 4 ja 96%. So the area will be changed by 96%. Now here the next question, if radius of circle is increased by 25%, find percentage change in its area. So इसके एरिया में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है. सो 25% की वैल्यू कितनी होती है? लेट्स सॉल्व इट वर्बली. 25% की वैल्यू होती है 1/4, राइट? 1/4. So radius is increased by 25%. So the new radius will be 5 and the old radius is given as 5/4. So the ratio of radius will be 5/4. Now as we know that area is directly proportional to the square of radius. So if radius is increased by 1 unit, that is 5/4 becomes 5/4, the area will be square of this. So this will be 25 upon 20, 25 upon 16. Square of 5 is 25 and 4 is 16. So this is ratio of new area upon old area. And if we want to find out the percentage change, so change will be 9 unit over 16 unit into 100. So if you find the value of 9 upon 16 into 100, we will easily get the answer. It is going to be 56 combination 1/4%. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what % he must increase his savings so that he could purchase the car in 9 months? कह रहा है कि एक मैन अपने इनकम का कुछ भाग सेव करता है, कुछ पार्ट सेव करता है ताकि वो 1 साल में कार परचेज कर सके. नेक्स्ट पार्ट ये कहता है क्वेश्चन का कि बाय व्हाट % ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग. वो कितने % से अपनी सेविंग को इंक्रीज करे अगर उसे वही कार 9 महीने में खरीदनी हो. सो इस क्वेश्चन से हमें ये समझना है कि जो कार की प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहेगी, बट वो जल्दी खरीद रहा है ये डिपेंड करेगा उसकी सेविंग पे, और वही सेविंग की परसेंटेज इंक्रीमेंट हमसे पूछी जा रही है. सो इनिशियली वो खरीदता, अगर वो उसकी इनकम अगर है और अगर वो सेविंग कर रहा है अपने ओरिजिनल अमाउंट से, तो वो उसे 12 मंथ में खरीद सकता था, राइट? वो उसे 12 मंथ में परचेज कर सकता था, लेकिन चूंकि वो अब अपनी सेविंग को बढ़ा रहा है तो अब वो 9 मंथ में परचेज करेगा, राइट? So let's find the LCM of 12 and 9. 12 and 9 LCM will be 36.
So 36, let's assume 36 is the value of car. कार की जो प्राइस है वो 36 रुपीज़ है. सो 36 रुपीज़ की कार उसे खरीदनी है. पहले वो 12 महीने में खरीद रहा था, अब उसे वो 9 मंथ में खरीदनी है. तो सेविंग वो कितने परसेंट से अपनी इंक्रीज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो उसे बचाना होगा वो बचाना होगा 36 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ 3 रुपीज़. अगर पर मंथ बचाता है तो वो परचेज कर लेगा. और अगर यहाँ पे उसे परचेज करना है 9 मंथ में तो वो 4 रुपीज़ पर मंथ सेव करेगा, तब वो जाके वो 9 मंथ में परचेज करेगा. सो ये तो ओरिजिनल सेविंग थी. अगर वो 12th मंथ में परचेज करता, ये वाली उसकी नई सेविंग है अगर वो 9 मंथ में परचेज करना चाहता है. नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी कि उसको कितने से इंक्रीज़ करना है. तो 1 से इंक्रीज़ करना, 1 यूनिट से ओवर दिस 3 यूनिट इंटू 100, डेट इज़ 33.33%. This is the answer. Now next question is saying price of sugar is increased by 16 combination 2 by 3% and consumption of family is thus decreased by 20%. Find the percentage change in expenditure. कह रहा है कि जो शुगर की प्राइस है वो 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3% से इंक्रीज़ कर गई है. और चूँकि ये प्राइस इंक्रीज़ की है इतने से, इसलिए उसी फैमिली की जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूमिंग पावर है उस फैमिली की, वो 20% से डिक्रीज़ कर गई है. तो जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें कितने परसेंट का चेंज, बदलाव आया है. नाउ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, खर्चा क्या होता है. खर्चा होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन. प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, राइट. जो भी रेट होगा, प्राइस होगा पर केजी का, उसमें कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कंजम्पशन केजी, या जिसमें भी अगर हम शुगर परचेज़ कर रहे हैं तो केजी में परचेज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी रुपीज़ में आती है एक्सपेंडिचर की, राइट. ये रुपीज़ में आएगी. अगर ये रुपीज़ पर केजी है, अगर ये रुपीज़ पर केजी है और ये केजी में है, तो हमारी जो एक्सपेंडिचर आती है वो रुपी में आती है. ये हमें समझना होगा. एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला इक्वल्स टू पी इंटू सी. नाउ अगेन दिस इज नाउ द क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल कि प्राइस ऑफ शुगर इन वैसे नाउ 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3% की परसेंटेज वैल्यू, हम इसको हम फ्रैक्शनल में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में. अगेन दिस इज 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3%, दैट इज़ 1/6. एंड thus अगर ये प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो द न्यू price will be 7 and the original price, old price will be 6. So this is the price of sugar. ये शुगर की बात होगी, प्राइस की बात होगी शुगर की. नाउ कंजम्पशन की बात कर लेते हैं. कंजम्पशन है हमारा 20%, बट ये डिक्रीजिंग में है. तो 20% की वैल्यू जो होती है 1/5 होती है, और अगर ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये हो जाएगा 4/5. डेट इज़ अगर ओरिजिनल कंजम्पशन 5 यूनिट है तो अब जाकर वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगी फैमिली हमारी. नाउ एक्सपेंडिचर का जो फार्मूला होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन होता है. सो नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. This is very simple. Equals to P into C, that is 7/6 into 4/5. So 7 4s are 28 and 6 5s are 30. So percentage in expenditure, so expenditure will decrease by 2 unit over 30. So 2/30 into 100. So this will 20/3, 6.66%. This is the percentage in expenditure. This is the answer. Now in this question it is given the sale of a train ticket is increased by 57 combination 1/7% and the price of tickets is again increased by 20%. Find the percentage change in revenue. So revenue is also the multiplication of price into sale. Now again we will do the same thing, that is price is increased by 20%. So
20% को हम लिख सकते हैं 1/5, and since it is increment of 1/5, so the ratio of new price to the old price will be 6/5, right? This is the ratio. Now sale, this is the price, and if you talk about sale, so sale is increased by 57 combination 1/7%. Now 57 combination 1/7% is written as 4/7. This is written in fraction form as 4/7. So if here it is given the sale of train ticket is increased by 57 combination 1/7%. So again this is the increment of 4 unit over 7 unit. So the ratio of new train price of the sale of train ticket, new train ticket, new sale is 11 unit and old sale will be 7 unit. Now the percentage change revenue is simply the multiplication of both this quantity, that is 66 upon 35. 66 upon 35. So percentage change in the revenue will be 66 upon 35. 66 is 131 upon 35 into 100. So if we can solve this and get the answer, so this will be the answer. So the basic concept is how to implement the percentage part to the fractional part, and implementing this method to get our answer.